Welcome to Equilitis Academy of Learning. Today in this video lecture we will learn about the two most important examples of chapter 10 of class 10th, namely as circles. The example number 3 and the example number 2 and the example number 3. What is example number 2? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times OPQ. आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को फील करते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट, ओके, तो ए सर्कल जिस सर्कल का सेंटर ओ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमें प्रूव करना है ये जो एंगल है ये पीटीक्यू एंगल जो दो टेंजेंट्स ने एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बनाया है ये बराबर है 2 टाइम्स द एंगल मेड बाय द कॉर्ड पीक्यू एंड द रेडियस। ये एक कॉर्ड है, PQ इज द कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड है, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर है लेकिन ट्वाइस, ओके। हियर हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास चीज है, हियर TP इज इक्वल टू TQ, वाई बाय थ्योरम 10.2 है ना। TP इज इक्वल टू TQ, थ्योरम 10.2 स्टेट्स दैट from an external point the two tangents drawn their length must be equal, okay। तो therefore अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो देखो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। अब देखो कैसे, ये एक साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये, और ये एक साइड है, ये इक्वल है, तो इसका साइड अपोजिट एंगल ये आपस में बराबर होते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, साइड्स एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, equal sides have equal opposed angles, okay। तो therefore मैं लिखूं एंगल TPQ is equal to angle TQP, okay। Now in triangle TPQ, अब देखो TPQ एक क्या बनती है, एक ट्रायंगल बनती है। हम मान के ले चलते हैं एंगल TPQ और TQP जो बराबर है इसको x के बराबर रखते हैं या थीटा के बराबर रखते हैं। तो हम मान के ले चलते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x है। जब ये x है तो ये भी x है क्योंकि सेम एंगल है, ओके। अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे TPQ ट्रायंगल, हम इसमें देखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो एक एंगल क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा TPQ प्लस दूसरा क्या बनेगा TQP प्लस तीसरा क्या बनेगा PTQ, एंगल PTQ। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस दिस इज अगेन इक्वल टू x प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो विच इंप्लाइज एंगल PTQ is equal to 180 degree. X plus x, it is 2x, we shift it becomes minus 2x, okay। और मैं ऐसे लिखूं एंगल PTQ is equal to 2 कॉमन निकालते हैं, 2 that is 90 डिग्री, यहां से भी जब 2 कॉमन निकालेंगे माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ और एक चीज हम देखेंगे, मुझे बोलो एंगल OPT, द वैल्यू ऑफ एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई इट इज 90 डिग्री? बिकॉज इट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस OP एंड द टेंजेंट PQ, ओके। सो बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1, okay। Now angle OPT can be written as angle OPQ, that is this part of the angle plus angle QPT. Means this angle, this OPT can be written as OPQ or PQPT is equal to 90 degree, okay। Angle OPQ we have to find it, plus QPT, the value of QPT it's the x is equal to 90 degree, okay। So the angle OPQ is equal to 90 degree, x shift, that's minus x, equation second. Use
use equation second in equation first. We get the required solution. That is, the equation first is angle PTQ is equal to 2 times the value of 90 minus x from equation second is angle OPQ. Hence, we have to prove the required example with an easy method. Okay, students. Before that, my example number 3 आपके लिए लाऊं. Pause the video to note it down. Okay, students. In this example number 3 and the important example, PQ is a chord. PQ एक chord है of length 8 centimeter. PQ की length 8 centimeter है. पूरे chord की length 8 centimeter है. Of a circle, एक circle पे of radius 5 centimeter. The radius of the circle is 5 centimeter. Okay. The tangents at P. This is the point. The tangent at P and Q intersect at point T. जो P पे और Q पे tangent है वो कहां पे मिला है? T पे मिला है. At point T, find the length of TP. We have to find out the length of TP. We have to find out the length of the TP. So we have to find out the length of the tangent. Solution here. Let it meets at R. PQ tangent meets OT at R. Okay. PQ chord meets the OT at point R. Here PQ is equal to 8 centimeter. Okay. Therefore, also PR is equal to QR. Why? PR and QR, because R intersect or bisect the PQ. Okay. So it's equal to 4 centimeter. Okay. So it's 4 centimeter. Okay. And OP is equal to 5 centimeter. Like this is equal to 4 centimeter. Okay. In triangle PRO is a right triangle. जो PRO triangle है ये right triangle है. या PRO is a right triangle. PRO is a right triangle because this here makes a 90-degree angle because it bisects it. Okay. When it is a 90 degree, this is the 90 degree. Okay. By PGT we use here PGT. By PGT it is OP square is equal to PR square plus OR square. Okay. What is the value of OP? It is the 5 square. What is the value of PR? It is the 4 square. Okay. Plus OR square. Okay. 5 square means 25 is equal to 16 plus OR square. Or 25 minus 16 is equal to OR square. 25 minus 9, 16, that is 9 is equal to OR square, which implies OR is equal to 3. Okay. OR 3. let हम मान के ले चलते हैं TP is equal to X, TP is equal to X and TR is equal to Y. TP is equal to X centimeter and TR is equal to Y centimeter. Okay. Again, triangle TPEO is right. TPO is right because the angle TPO here is 90 degree. So it's a right triangle. Again by PGT. So we use here the PGT theorem, the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem said hypotenuse, the OT is the hypotenuse of that triangle. OT square is equal to TP square plus OP square. Sorry, OP square. Yes, OP square. Okay, OP square. That is OT square. OT square means TR. It is TR plus OR. Exactly. TO. It means TR plus OR square is equal to TP square plus OP square. Okay. And TR means Y plus OR means 3 square is equal to TP means X square. TP means X square plus OP means 25. OP means 25. Okay. It becomes, okay, write it equation first. Also, triangle TRP is right.
TRP is right. If this angle is 90, so this angle must be 90 degree. So use here the Pythagoras theorem. It is TP square is equal to, because the hypotenuse TRP triangle का hypotenuse TP बनेगा, okay, is equal to base, that is TR means y square or TR square plus PR square, okay. TP means x square is equal to TR means 4 square, that is 16. TR means 4 square, that is 16 plus TR means y square plus PR means 4 square, okay. So it becomes equation second, okay. Now y plus 3 square is equal to x square. The value of x square is here. It is y square plus 16, 4 square 16 plus अपना 25, okay. Y plus 3 का whole square, it is y square plus 9 plus 6y is equal to y square plus this, that is 41, okay. This and this will be cancelled out, that is 6y is equal to 41 minus 9, that is 6y is equal to 41 minus 9, that is 32, that is y is equal to 32 by 6, that is 16, that is 3, that is 16 upon 3 centimeter is the value of y here, Now we have to find out the value of x, and we find the value of x in here, okay. Y is equal to 16 by 3 using equation number second, okay. That is x square is equal to, what is the value of y square? The value of y square here is 16 by 3 ka whole square plus it is 4 square, that is 16, okay. That is x square is equal to 16 कॉमन निकलेगा, यहां पे क्या बचेगा 16 upon 9, because 16 is common and it becomes 16 upon 9 plus it's 1, okay. So the x square is equal to 16 into 25 upon 9, okay. And when x is equal to, it becomes whole root of 16 into 25 by 9, the x is equal to 4 into 5 upon 3, that is 20 upon 3. So the length of the tangent is 20 upon 3 centimeter. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया in detail. Okay students, so this is the end of the chapter circles with examples, introduction and all the questions of NCERT. Okay, all the best.